मेरा नाम विशाल पासवान है। ये जो पेशेंट है मेरी मदर इन लॉ हैं, इनको किडनी का प्रॉब्लम था। लगभग 1 साल से उनका किडनी का प्रॉब्लम ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम लोग मेरा घर डालखोला वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर वेस्ट बंगाल में मैंने दुर्गापुर में भी दिखाया, इलाज करवाया, तो वहाँ पर कोई मतलब कुछ हुआ नहीं, कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद फिर मैं गया कोयम्बटूर में भी दिखाया, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर मेरे मौसा जी है, जो मेरे मदर इन लॉ के सिस्टर के हस्बैंड है, उनसे पता चला जो हैदराबाद में एक यशोदा हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टर सब अच्छे हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है। तो फिर मैं उनके साथ यहाँ पे आया हूँ हैदराबाद में फिर मैं प्रिया मैम से मिला था। वो हमें शशि किरण सर से मिलवाए थे। वो किडनी के स्पेशलिस्ट है। शशि किरण सर और उनके टीम ने मिलकर इनकी ट्रीटमेंट की। इनका किडनी का प्रॉब्लम था, तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में इनके हस्बैंड जो है मेरे फादर इन लॉ, वो अपनी किडनी डोनर किए थे मेरी मदर इन लॉ को। इसके लिए मैं शशि किरण सर को और उनके टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। शशि किरण सर यशोदा हॉस्पिटल के किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छे से हम लोगों का काम करवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवाए हैं। इसके लिए मैं उन्हें और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हमने शशि किरण सर से मिले थे। उन्होंने बताया जो किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कैसे करना है नहीं करना है, वो बैठ के हमें समझाए बढ़िया से। फिर हमें डोनर मेरे पिताजी मतलब ससुर जी थे, उन्होंने अपना मतलब डोनर किए हैं किडनी। शशि किरण सर इसके बारे में बहुत कुछ बोले थे, कैसे सर्जरी करना है, कैसे ट्रांसप्लांट होगा, सारा चीज़ हमें समझाए, हमें अच्छा लगा। फिर हमने करवाया। अभी मेरी मदर इन लॉ ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। कुछ दिन में हम लोगों को यहाँ से छुट्टी भी मिलेगी, फिर हम जा सकते हैं। अभी ठीक है फिलहाल। और कहीं पर मतलब जितना भी दिखाया, कहीं पर ऐसा इलाज हुआ नहीं। और यशोदा हॉस्पिटल में अच्छा से इलाज हुआ है, अच्छा से सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके लिए यशोदा हॉस्पिटल, डॉक्टर शशि किरण सर और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी मदर इन लॉ को एक न्यू लाइफ दी है। Good morning. I am Dr. Kashinatham, working as a consultant urologist and transplant surgeon at Yashoda Hospital, Malakpet. I am working here from last 15 years, and we have done more than 500 kidney transplantations here from last 15 years. Today I am going to talk about a person regarding kidney transplantation. One young lady, middle-aged lady, 40 years female lady, came to us with kidney failure. She was on dialysis regularly, so she was planning for a kidney transplantation. They came to us from long distance from West Bengal, and her husband came here to donate kidney. Her husband, 46 years male, he is ready to give kidney for her wife. We have evaluated this person regarding his fitness for surgery. He had some lung problem, so we have evaluated thoroughly, and we prepared that patient with preoperative chest physiotherapy and all the precautions we have taken, and we have taken him for kidney transplantation, and we have taken left kidney from him and transplanted to his wife. Post-operatively, he was very fine. Post-operative day 1 itself, we have mobilized him. We have given good chest physiotherapy for him, and at day 5 we have discharged this patient, and now he is with me after 10 days. Now he is very fine. He is working and he is walking, and he is taking care of his wife also without having any problem, and there is no difference for him before surgery and after surgery, and he is entirely absolutely normal now. Thank you. I am Dr. Sashi Kiran, working as a consultant nephrologist at Yashoda Hospital, Malakpet, Hyderabad. A few days ago, we had the unique opportunity to treat a patient who came all the way from West Bengal to us. Her name is Mrs. Madhumala Mandal, a 40-year-old lady who has 4 children. She had been to several hospitals all across the country to get a kidney transplant done, but she was rejected in all these places because she had preformed antibodies against the donor, who was her husband. Since she had 4 children from her husband, she had preformed antibodies, and that was a unique challenge which we had to overcome. This was a HLA sensitized transplant. We worked up this lady. We found she had DSAs which were moderately elevated, so we could desensitize her successfully and perform a transplant. We had a few apprehensions at the time of desensitization, whether this lady would develop a rejection because she is sensitized against her husband.
But in the post-operative course, she didn't develop any graft dysfunction. Our desensitization therapy was effective. The post-operative course was smooth. She didn't need any anti-rejection therapy. She didn't need to undergo even a biopsy also. At the end of 1 month now after the transplant, she is doing well. Her creatinine is 0.8 milligram per deciliter. She has put on some weight. Her appetite has greatly improved. Her quality of life has improved. Her blood pressure is now normal, and she is very happy that her graft is functioning well and her quality of life has improved. And at the same time, me along with my team, we are also very happy that we could pull off successfully a difficult transplant where the husband was the donor and the wife was the recipient, and the wife had preformed antibodies against the husband. Thank you.